So the next important concept is about motional EMF. The EMF induced due to relative motion of magnet and conductor is called motional EMF. जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि it is motional, so it is due to the motion of conductor or the motion of magnet. So दोनों का जो relative motion है उससे जो EMF induce होती है उसे हम motional EMF कहते हैं. So इसका formula जो है EM which is the motional EMF equals to minus VBL sin of theta. इसमें जो V है that is the velocity, relative velocity, B is the magnetic field, L is the length of conductor, and theta it is the angle between the conductor and the field. So right hand rule can also be used because it is a cross product. So right hand rule कहता है कि अगर हम fingers की जो direction है from the direction of motion of the conductor to the direction of the field, अगर हम fingers को rotate करते हैं of right hand, so thumb indicates the direction of EMF. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि field leather is into the page or into the plane of paper. This is the conductor which is moving in this direction. So अगर हम fingers को इस V की direction से inside the page अगर rotate करते हैं, thumb indicates the motion of EMF. So positive charge ऊपर आ जाएगा and this indicates the motion of EMF. There is mutual induction. So as the name implies, mutual means कि more than one conductor की बात हो रही है. So if the change of current in the primary coil induces the current in secondary coil, this is called mutual induction. Formula जो है इसका ES यानी जो EMF in secondary है equals to minus M delta IP over delta T. इसमें जो M है that is mutual inductance and delta IP is the change of current in the primary coil. यहाँ पे जो mutual inductance है उसका हम फॉर्मूला निकालते हैं N S phi S over IP. Ns is the number of turns in the secondary coil, phi S is the flux of secondary coil, and IP is the current in primary coil. The unit of mutual inductance is Henry, capital H. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइमरी कॉइल है उसके अंदर हमने करंट को फ्लो किया. अगर करंट इंक्रीज या डिक्रीज करेगी तो डेफिनेटली इसकी जो फील्ड है वो भी स्ट्रॉन्ग और वीक होगी, फ्लक्स चेंज आएगा. और सेकेंडरी कॉइल के अंदर हमें एक करंट शो होगी विच इज शोन बाय डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर. What is self induction? सिमिलर टर्म्स हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं. सेल्फ इंडक्शन के अंदर सिर्फ फर्क ये होगा कि वहां पे हमारे पास दो कॉइल्स थी और सेल्फ इंडक्शन में एक ही कॉइल के अंदर अगर हम करंट चेंज करते हैं तो उसी के अंदर एक नई करंट जो है वो इंड्यूस होगी सेम कॉइल के अंदर. तो इसके फॉर्मूला के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम वही फॉर्मूला है, फर्क ये है कि वहां पे M था, यहाँ पे L है विच इज द सेल्फ इंडक्टेंस एंड L इज ऑल्सो गिवन बाय N phi over I. यहाँ पे हम प्राइमरी सेकेंडरी नहीं कर रहे क्योंकि कॉइल एक ही है हमारे पास. और सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट भी हेनरी है बिकॉज फॉर्मूला इज दी सेम. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कॉइल है विच इज दिस रेड कलर्ड कॉइल और साथ एक एसी पावर सप्लाई है. अगर हम इस करंट को चेंज करते हैं तो इसी कॉइल के अंदर सेकेंडरी जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो चेंज होंगी और एक इंड्यूस्ड करंट होगी जो कि इस ब्लू एरो से शो हो रही है. दिस इंड्यूस्ड करंट इज इन रिवर्स डायरेक्शन एज टू दी प्राइमरी करंट, यानी दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगी. ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी, बेकरेल, वेबर या वोल्ट. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हेनरी. Then based on the concepts of induction, we define a practical device which is AC generator. So a device that is used to convert mechanical energy into electrical energy is called AC generator. It is based on Faraday's law of electromagnetic induction. It consists of a magnet, armature, slip rings and carbon brushes. और EMF का जो फॉर्मूला है that is N omega AB sin of theta. इसे एक्सप्लेन मैं करता हूँ. So here you can see the basic structure of AC generator. This is a magnet. This coil is called the armature. ये slip rings हैं और ये 7 carbon brushes हैं जिनके साथ wires लगी हुई हैं. So N is the number of turns in the armature. Omega is the angular velocity.
A is the total surface area of the coil and B is the magnetic field produced by the magnet, and theta is the angle between the armature and the magnetic field. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम करंट्स कब होंगी, क्योंकि हम फॉर्मूला में साइन ऑफ थीटा डिवाइड कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज दी एरिया, और एरिया वेक्टर जो होता है दैट इज ऑब्वियसली परपेंडिकुलर टू दिस। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर और फील्ड के दरमियान एंगल 0 है, सो करंट और ईएमएफ इज 0। इस केस में जो एरिया वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, सो एरिया वेक्टर फील्ड के दरमियान एंगल जो है दैट इज 90। सो एट 90 डिग्रीज द EMF is maximum. Again 180 degree पे sin of 180 is 0, so EMF is 0. 270 पे it is negative of maximum, and 360 पे again it is 0. So it is forming a positive and negative half cycles. So this is AC current. The mechanical energy is changed into AC electrical energy. So this is AC generator. The current in AC generator is maximum when the angle between field and coil is 0 degrees, 90 degrees, 180 degrees, and none of these. The correct answer is option B, 90 degrees, जैसे कि हम देख चुके हैं. It is based on sine of theta and sine of 90 is 1. So here you can see, since sine of 90 is 1, so EMF and hence current will be maximum. So this is all about AC generator. In the next slide, we'll see about transformers. Thank you.